Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. First, we'll start with the derivative and technical update. On the technical front, Nifty opened on the lower side yesterday, but did not breach the previous day low. And last hour buying led index higher and closed in the green. On the daily chart, Nifty formed a bullish candle or green candle, but remained restricted within a previous session high-low range. Now trend and momentum is positive. So technically now support at Nifty 18,100 levels. While close above or if Nifty sustain above 18,400 levels, then fresh momentum can be seen and all-time high levels also can be seen. On the Bank Nifty front, Bank Nifty yesterday traded positive throughout the day. On the stock specific front, Bank of Baroda, IndusInd Bank, and Canara Bank witnessed a buying momentum and showing the strength. So Bank Nifty yesterday closed above previous day high levels and continue to trade with the higher high and higher low formation, which is a positive bias for the Bank Nifty. Bias for the Bank Nifty remains bullish and Bank Nifty support at 42,000 levels and 41,500 levels and resistance will at 44,000 levels. Now, on the derivative option front, Nifty future witnessed a short covering yesterday by minus 0.52% with the decline of 71,000 shares. TCR is up from like 0.79 to 0.99 levels, and which is adding a strength in the index. So, major call addition was seen at 18,300 and 18,400 and 18,500 strike. While on the put option front, major addition were seen at 18,200 and 18,000 strike. On the Bank Nifty front, Bank Nifty also witnessed a fresh long build-up by 9.46%, which is the addition of 2.94 lakh shares. Bank Nifty PCR gained from 1 to 1.09 levels. So on the Bank Nifty front, major addition was seen at 42,500 call by 38.73 million shares and 43,000 call by 22.24 million shares. While on the put option front, 42,500 put by 2.49 million shares. And if you see on the long build-ups, the long build-up is seen at Alkem, JK Cement and Bank of Baroda and short build-up seen at MFSL, LTI and ILCC. Now on the FII data front, FII added a long contracts by positive 16,102. Overall net long by 59,510 contracts. So net long short ratio is a 68.06. This data is a positive and showing good numbers. On the cash option front, FII negative 697.83 crore and DII bought 636.39 crore. On the report call front, we are in the technical report. One can buy a BDL call in the range of 960 to 955 and stop loss is 928 and target is 1046. On the derivative front, one can buy IndusInd December future in the range of 1,178 to 1,168. Stop loss is 1,145 and target is 1,257. So that's it from my end. Now I will hand over to Bhavesh sir for further research update. Thank you and over to you, sir. Hi, good morning all. So there are a few set of news. First, Australia is expected to sign a free trade agreement with India. So with that, what that means is that whatever taxes, whatever import export happen between the both the countries, they won't be taxed. They will be taxed only once in the country, in one country itself. So this will help IT sector because IT sector they have has been having double taxation to the tune of $200 million. So overall, marginally positive. Similarly, for steel companies, it is marginally positive because Indian companies mostly import coking coal from Australia, and that attracts a duty of 2.5%. So now that will go away. So that is marginally positive again. Uh, then in this then Bajaj Auto has launched a new Pulsar P150 and bike is introduced in two versions, single disc and twin disc in the range of 1.16 lakhs to 1.2 lakhs.
So this is like a positive because one of the very successful brands for Bajaj Pulsar has been over the years. Then Infosys has won a deal from a battery technology company, Envision AESC, to develop cloud-based platform. Although deal size was not disclosed, this is very positive because these kind of deals are like long-term opportunities in a big way. Uh, and lastly, a world steel production remained flat on a YOY basis to 147 million ton. But on a month-on-month basis, it's down 3%. This is mainly because China has cut some production and there are COVID cases rising. Although it is stated that they are coming out of COVID, but still a lot of areas the things have not picked up as we would like. But on the Indian front, Indian steel production grew by 3% on a YOY basis. Not a very big growth, but I think once now that the export duty is gone away, we will see increase in production and also increase in exports in a meaningful way. So that's it from me. Over to you, the retail team. Good morning, Tim. A few more news updates from my end. On Monday, this CA Swift Investment Companies had disinvested 2.5% stake in the Delivery Limited Company, which is amounted rupees 607 crores through the open market transaction. So this will be a little bit pressure on the Delivery Limited Company. Second is on the NARCL. They are eyeing to buy the ARC buyout from the ARC lenders. They are in the early stage of negotiations with the government, which is the government promoted of the bank bad loans to sell the debt of the Videocon promoters. That is VOVL. The amount is rupees 860 crores. So this is one of the largest distressed loan in their books. So this will be in focus today. Next is on Shriram Housing Finance, which is a subsidiary of Shriram City Union Finance. Is actively pursuing a small lenders in the affordable housing space for acquisitions and mergers. So this talks will be in focus today. Next is on oil. Oil prices rose slightly in early Asian trade on Tuesday, a day after Saudi Arabia denied a media report that it was discussing an increase in oil supply with OPC and its alliance. Next is on RBI. So on Monday, RBI has allowed HDFC Bank Limited and Canara Bank to open a special Vostro account for trade in rupee with Russia. So this may be HDFC Bank and Canara Bank may will be in focus for this reason. Next is on Future Group Retail. So Future Group has pledged for termination of arbitration proceeding uh, has been dismissed by the Delhi High Court. The proceeding has been initiated by Amazon at the Singapore International Arbitration Court. So Future Group, that's a negative news. The next is on exporters. The exporters had seen a great festival season because of the withdrawal of the GST exemption on outbound international freight. So that is one. Next is on Bajaj Finance. The Bajaj Finserv has increased its fixed deposit FD interest rates by up to 25 basis points. These new rates are effective from November 22 this year. The revised rate on Bajaj Finance uh, shall be applicable on fresh deposits and renewals of maturity deposits up to rupees 5 crores, as per the press update. And next, the state finance ministers, the panel of the state finance minister is likely to recommend a uniform GST of 28% on online gaming, irrespective of whether it is game of skill or game of chance. So it is likely to suggest a revised formula for calculating the amount on which the GST would be alive. Next is Inox Green Energy Service, the subsidiary of wind turbine generator, is going to depth on the bourse of the November 23. The final price has been fixed at rupees 65 per share. Vedanta, the company said its board of directors have approved a third interim dividend of rupees 17.50 per share on face value of rupee 1 per share for financial year 23. The dividend is worth rupees 6,505 crore. The record date for payment of a dividend has been fixed as
November 30. Next is on Tech Mahindra. The LIC of India has bought 1.9 crore shares, which is equivalent to 2.01% stake in the Tech Mahindra company. With this, the shareholding pattern has increased to 6.87% from 4.86% earlier. Next is on Bharti Airtel. So the Nextra Data, which is the subsidiary of Bharti Airtel, has started to construct a new hyperspace data center in Kolkata. So the company will invest 600 crores in the development of this project, and this will increase the presence in the East India, which is the undeserved market as of now. So because of this, the East and North region, along with the SARC countries, will also be included. So that's a positive news for the Bharti Airtel. Next on Siemens, the company has recorded 20.7% year-on-year growth in consolidated profit at rupees 381.7 crores for the quarter ended. The September FY22, and overall the revenue has grew by 11.6% to rupees 4,657 crore as compared to year ago. The strong growth across this was basically because of the strong growth which was seen across the businesses. For the financial year 21-22, the consolidated profit has jumped to 22.5% to rupees 1,260 crores, and the revenue has increased by 22.3% to rupees 16,138 crores as compared to the previous year. So this overall, the news remains a positive for the Siemens. Next is on Hindustan Zinc. The subsidiary of Vedanta will trade ex-dividend on November 23. The company recommended an interim dividend of rupees 15.5 per share. And lastly, on Mindtree, the date for the Mindtree merger is November 23, and the record date is November 24. Mindtree will be delisted from the exchange, and L&T Infotech will be renamed as LTI Mindtree. So that's all from my end. I will hand over to Hitendra for more Hindi updates. Thank you, and over to Hitendra. या थैंक यू सर गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते स्टार्ट करेंगे हमारे रिपोर्ट कॉल के साथ। हमारी जो पोजीशन रिपोर्ट कॉल्स है सबसे पहले बीडीएल में है जो कि हमें बाय करना 960 से 955 के रेंज में, स्टॉप लॉस रहेगा 928 के आसपास और टारगेट रहेगा 104 से। अगर हमें इससे थोड़ा नीचे के रेंज में भी मिलता है तो भी ले सकते हैं। पोजिशन हमें लग रहा है ये कॉल अच्छी है, दिसंबर सीरीज में अच्छे से चल सकती है। सेकेंडली इंडसइंड बैंक में उसका हमें दिसंबर फ्यूचर बाय करना है 1178 और 1168 के रेंज में। अगर हमें थोड़ा नीचे के रेंज में मिलते हैं तो भी हम इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। पोजिशनली हमें इसके ऊपर बुलिश है और दिसंबर मंथ में लगता है ये चल सकता है स्टॉक। सो 1145 का टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट रहेगा 1257 का। इसके साथ हम देखेंगे अभी रिसर्च अपडेट जो वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोडक्शन का डेटा आया था, डेटा देखेंगे तो फ्लैट ही था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि 147 मिलियन टन था, जबकि वो गिरा है 3% मंथ ऑन मंथ अक्टूबर में। इंडिया का अगर स्टील प्रोडक्शन देखेंगे तो ग्रीव हुआ 3% से वाईओवाई बेसिस पे, बट 6% और 6% हुआ मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, जो कि 10.5 मिलियन का है। फिर हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने एक एफटी एग्रीमेंट है वो साइन कर लिया है इंडिया के साथ। सो सबसे बेटर है ये आईटी सेक्टर के लिए, क्योंकि आईटी की कंपनीज उसके ऊपर डबल टैक्सेशन के चलते $200 मिलियन के इसके बाद सेव करेगी, और आईटी कंपनीज अपने नए फ्रेश ग्रेजुएट्स को भी ऑन साइट के लिए हायर कर सकती है वर्क वीजा स्टूडेंट्स की बेसिस के थ्रू। और एक डेवलपमेंट देख रहे हैं कि जो स्लो डाउन और ले ऑफ था टेक सेक्टर में, वो हेल्प करेगी आईटी कंपनीज को, जो उसमें रिड्यूस कर सकती है एट्रिशन, और विच इन टर्न हमारे लिए ये बेटर रहेगा मार्जिन इंप्रूव करते हुए। बजाज ऑटो ने कहा है कि उन्होंने एक नई पल्सर P150 लॉन्च की है। ये पल्सर सिंगल डिस्क और ट्विन डिस्क वर्जन में रहेगी। ये प्राइस रहेगा इसका 1.16 लाख से 1.2 लाख के बीच में। 150 सीसी का इंजन रहेगा और मोनोशॉक रियर सस्पेंशन बॉडी रहेगी, और इसमें एक 10 kg रिडक्शन वेट, मतलब देखा जाए 10 kg इसका वेट कम हो गया, इससे 11% इसकी जो एफिशिएंसी वो भी इंप्रूव होगी। सो ओवरऑल ये पॉजिटिव रहेगा बजाज के लिए। होल्ड रेटिंग है 3981 के प्राइस टारगेट के साथ। इसी के साथ टाटा स्टील ने कहा है कि जो रेटिफिकेशन जो ऑस्ट्रेलिया ने एफटीए साइन किया है वो एक अच्छा स्टेप है। इससे वे कस्टम ड्यूटीज में जो कोकिंग कोल पे रखता था उससे 2 से 2.5% के आसपास का जो उन्हें देना पड़ता था वो कम होगा। तो हालांकि ये अमाउंट बहुत मतलब मिनिस्क्यूल है, बट ये पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेगा स्टील मेकर्स कंपनी के लिए।
इन्फोसिस ने भी एक डील विन की है बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी एनविजन ईसेक के साथ, जो डेवलप करेगी क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म जो हेल्प करेगी ऑटोमेटिक और मैनुअल प्रोसेसिंग जो कि ईवी बैटरी के लिए होता है। डील साइज डिस्क्लोज नहीं की गई है, बट हमें लगता है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेगा इन्फोसिस के लिए, क्योंकि एज ऑटोमेटिव इंडस्ट्री जो कि एक रैपिड चेंज हो रहा है और ऐसे डील विन जो मिल रहे हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी इन्फोसिस में। टीआरएआई ने कहा है कि उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है और सीलिंग जो एमआरपी फॉर जो P4 चैनल्स के लिए रखा है और रिस्टोर किया है जो प्राइस कैप था जो पहले के चैनल जो कि एक पार्ट ऑफ बुक है जो कि 19 रुपीज है, जो कि पहले 12 रुपये था। और ब्रॉडकास्टर अभी मैक्सिमम उसके ऊपर 45% का डिस्काउंट कर सकते हैं प्राइसिंग इस बुक के लिए। सो इन एडिशन में जो ब्रॉडकास्टर्स ने कहा कि वे फ्रीली प्राइस कर सकते हैं वाला कार्ड चैनल्स को, बट जो डिस्ट्रीब्यूटर टीवी चैनल जो शो इंश्योर कर रहे थे कि जो सर्विसेज और प्रोवाइडर्स एज पर उनके बुकेज रहेंगे, और उन्होंने ऑप्ट किया है फेब 1 2020 से। सो ओवरऑल एक पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेगा ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्रीज में। इसके बाद हम देखेंगे माइंट्री का। देखा जाए तो आज हमारा एक्स रेट है माइंट्री एलएनटीआई के लिए, इसके चलते जो स्टॉक्स में वॉलिटिलिटी थी वो भी थोड़ी हमें थमती हुई दिखेगी, और कल से ये स्टॉक एलटीआई माइंट्री के नाम से ट्रेड करेगा और माइंट्री डीलिस्ट हो जाएगा। सेकेंड हम देखेंगे हिंदुस्तान जिंक ने कहा है कि वो उसका एक्स डिविडेंड डीट है, 15.5 रुपए का डिविडेंड मिलेगा उसमें। भारतीय एयरटेल ने जो उनकी जो सब्सिडी नेक्स्ट्रा उनके साथ एक कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाइपर स्केल सेंटर डेवलप किया कोलकाता में। कंपनी 600 करोड़ उसमें इन्वेस्ट करेगी और लार्जेस्ट डेटा सेंटर बनाएगी ईस्ट इंडिया में, और ये सब अनडिजर्व मार्केट्स को जो कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन और सार्क कंट्रीज को सर्व करेगा। एलआईसी ने टेक महिंद्रा में 2 करोड़ के आसपास के शेयर्स बाय किया, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2% स्टेक होता है। तो करंटली इनकी पास 4.86% है, वो बढ़ के अभी 6.87% हो रहेगी। वेदांता ने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया कि उनका जो डिविडेंड है 7.5 पर शेयर का वो जो है, और 6,000 करोड़ के आसपास का डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। उसकी जो डेट है वो नवंबर 30 को फिक्स की गई है। अरविंद एफएसएन ई कॉमर्स जो कि नायका है, अरविंद अग्रवाल जो कि उनके सीएफओ, उन्होंने कंपनी से रेजिग्नेशन दे दिया है 25 नवंबर को। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस जो कि इनकी सब्सिडरी है विंड टर्बाइन जनरेटर आइनॉक्स विंड, वो डेब्यू करेगी प्रोसेस पे नवंबर 23 को। आज उसका लिस्टिंग है और फाइनल प्राइस 65 रुपीज पर शेयर का तय किया गया है। जो करंट अकाउंट स्वेप्ट इन्वेस्टमेंट से मंडे को उन्होंने डाइवेस्ट किया है 2.5% स्टेक सप्लाई चेन कंपनी दिल्ली वेरी में, और 607 करोड़ थ्रू अपॉन मार्केट ट्रांजैक्शन किया गया है। विद 860 करोड़ का वीओवीएल बिड के साथ एनडीआरसीएल आईज का दी है बड़ी लार्जेस्ट डेट बाय आउट के लिए, और एक एआरसी लेंडर के लिए सबसे एडवांस नेगोशिएशन में है। बेसिकली ये बाय कर सेल कर रहे हैं जो वीडियोकॉन प्रमोटेड पीओवीएल टेक्नोलॉजी का है, जो कि सबसे बड़ा डिस्ट्रेस है नोटबुक्स के लिए। श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस की जो सब्सिडी है श्रीराम सिटी यूनियन, वो एक्टिवली परस्यू कर रही है एक स्मॉलर लेंडर जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस सेगमेंट को एक्विजिशन करने के लिए। देखा जाए तो वैल्यूएशन मिसमैच थोड़ा दिख रहा है, बट हमें लगता है आगे थोड़ी हर्डल्स दिख सकती है, बट बातचीत अभी भी चालू है। ट्यूसडे को हम देख सकते थे कि ऑयल प्राइसेस में थोड़ा हमें गिरावट दिखी थी। बेसिकली इसकी रीजंस वही थी कि सऊदी ने कहा था कि वो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, बट बाद में सऊदी ने कहा कि वो कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे 5 लाख बैरल्स के आसपास तक। तो हमें शार्प प्राइस भी दिखा उसमें। तो अभी क्रूड दिख रहे तो $87 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल एक बेनिफिशियली अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंडिया के नीचे आते हैं। आरबीआई ने आरबीआई ने मंडे को अलाउ किया एचडीएफसी बैंक और कनाडा बैंक को अपने एक स्पेशल वॉस्टो अकाउंट ओपन करने के लिए, जो कि ट्रेड कर सकते हैं रशिया के साथ। फ्यूचर ग्रुप की प्ली भी टर्मिनेट कर दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने, बेसिकली आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के लिए, और ये प्रोसीडिंग्स की अमेजॉन की जो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में। एक्सपोर्टर्स के लिए एक अच्छी न्यूज है कि उन्होंने जो अमेड ऑफ विड्रॉल जीएसटी एग्जाम्पशन था आउटबाउंड इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, सो ओवरऑल एक्सपोर्टर्स के लिए पॉजिटिव है। बजाज फाइनेंस ने कहा है कि उन्होंने अपनी एफडी रेट्स को 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। बेसिकली 22 नवंबर से इफेक्टिव रहेगी, और जो रिवाइज रेट्स रहेंगी बजाज एफडीज पे वो एप्लीकेबल फ्रेश डिपॉजिट्स और मैच्योरिटी जो अप टू 5 करोड़ से उसके ऊपर भी लगेगी। द पैनल ऑफ स्टेट फाइनेंस ने कहा कि मिनिस्टर की उन्होंने रिकमेंड किया यूनिफॉर्म जीएसटी लेवी फॉर 28% के लिए, जो कि ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज है, इररिस्पेक्टिव वेदर एक गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है। तो उन्होंने कहा कि बट हाउएवर ये लाइकली सर्विस रिवर्स फॉर्मूला रहेगा, वो अमाउंट जीएसटी में ही लेविट होगा और वो जीएसटी लगेगा इसके ऊपर 20%। So that's it from my end. Thank you everyone for attending the morning con call. You may now disconnect.